गर्मी बहुत है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्सेशन सेशन है वो है अनीस बाज़मी, विकास बहल, अभिषेक शर्मा और महावीर जैन जी के साथ। ये है कॉरपोरेट कल्चर इन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। तो चलिए सुनते हैं। Minister of Information and Broadcasting, Government of India, to please come up on stage and to do the honors of all these dignitaries who are present for this session, Corporate Culture in Film Industry. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to all these dignitaries, the speakers and the moderator, Mr. Komal Nahta. I request Shri Fitul Kumar to do the honors. We have with us Mr. Anees Bazmi. We have with us Mahavir Jain. Mr. Abhishek Sharma. Mr. Vikas Behl, and the moderator, Mr. Komal Nahta. Nahta, sorry. Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. Now I request the moderator, Komal Nahta, to start the session. Nahata. Komal Nahata. Komal Nahta. Nahta. जो बिजनेस remember, जो हटेगा नहीं ना हटा कुछ भी हो जाए नहीं हटेगा. Good evening friends, it's a delightful experience to be moderating a session with such I won't call them stalwarts, but their work befits works of stalwarts. They are very young, but they have accomplished a lot in this period, in this short span, and of course they've got miles ahead to go. So we are going to talk on the corporate culture in the film industry. Let me introduce you to the panel. Vikas Behl, Mahavir Jain. I think we can do with a round of applause for each of the panelists. Mahavir Jain, Anees Bazmi, and Abhishek Sharma. He deserves double the applause because he's just gotten married. He never told any of us. He just informed us that he's gotten married to his sweetheart. I think she's here. Okay. Can you just stand up? Let the world know. That's Shraddha. Shraddha Sharma now. Vikas, I'll start with you. Your queen, one of your biggest hits, was made for a corporate house. Before the corporate culture set in, there were individual producers, there were individual financiers. Do you think the corporate culture that was introduced to the film industry, it has done more harm than good or more good than harm? Definitely there are pros and cons. So what do you think? What has happened to the industry? Is it a better place or that was a better option? Hello. Yeah. Actually, I come from. So I was an MBA. After that, I was working as a marketing guy for the longest time, and I never thought at that point in time when I come to Bombay that movie is the place for us, right? So you do your MBA, you get selected, and you work in corporate houses. And I think at that point in time, for the first time, Ronnie started. UTV was doing what it was doing. And then I remember exactly those moments of seeing Khus Laka Ghosla, Swades, Rang De Basanti. And suddenly it seemed like magic is happening, right, in the movie business. And at that point in time, I, for the first time, felt that maybe we can be a part of the movie business, right? Otherwise, there was no, otherwise, if you have money, you're a producer, or if you have the skill, you're a director. Otherwise, there's no window for you. If you have the looks, you are the actor. Yeah, some of them there. So I think it opened up a big window for people to walk into the business, which is a really good thing. I haven't seen the other side.
because since the time I joined, it was always the corporate world. But by the end of it, just seeing it as an outsider, I think what matters is the end product. And the one feeling though I do have, even though I've come from a full corporate side and I work with UTV and Viacom had made the film, that I still feel it's a business of heart, you know. And I think the corporate culture and that business of heart needs to match, you know. And I've seen a lot of directors who would come to me when I was in UTV and say, 10 लोग बैठ के स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, right? अभी 10 लोग और सुनेंगे, the marketing team सुनेगी. How do I travel with my vision through so many people? And somewhere that vision gets lost is what they believe, and maybe it does happen. So I think keeping that heart of movie making alive, if it can exist with corporate, I think it's a great combination. It's a tough one, but it's a great combination to have. So it's got its pros and cons, and till the time we get to make great films, I think everyone's welcome. The pros are more. Yeah, I think so. I think so. But I think that thing now that when a director wants to make a movie and he has a vision, and there's that one person who's sitting on the other side who follows that vision and says, I'm going to go through this journey with you, and then they become partners. Now that should not get taken away in the corporate culture. That's all. If that is followed, then it's only more discipline, it's only more discipline of production, finance, every which way it gets much, much more discipline. But yeah, by the end of it, great movies have to be made, so whichever way they get made. Anees bhai, actually you started out when there were individual producers, individual financiers, you know. जैसा विकास ने कहा, मैं तो आया ही इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइज हो चुकी थी. आपने तो वो कल्चर भी देखा है और कॉर्पोरेट कल्चर भी देख रहे हैं. और आपको दोनों में ज्यादा आसानी किस में लगती है एज अ फिल्म मेकर? जैसा विकास ने कहा कि प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हर सिक्के के दोनों पहलू है. बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कुछ खराबियाँ भी है हर चीज़ में. पहले जो सिंगल प्रोड्यूसर्स थे तो उसमें अच्छाइयाँ बहुत ये थी कि एक जो प्रोड्यूसर अपने बीवी के जेवर बेचकर अपना सब कुछ स्टेज पे लगाकर जब फिल्म बनाया करता था, तो वो एक अलग पैशन उसका होता था. एंड उसी पैशन के साथ बाकी जो है हम लोग सब काम करते थे. इसलिए कि पहले जो फिल्में बनती थी उसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग होती थी कि भाई डायरेक्टर जो है वो दोस्त है या उसकी पहचान है, और एक्टर्स एंड उस तरह फिल्में बनाते थे. और अगर हम जो एक फिल्म नहीं ठीक चलती थी तो भी नेक्स्ट पिक्चर में सारे लोग कॉपरेट करते थे. ये एक्टर को लगता था अच्छा ये प्रोड्यूसर की बेचारी की फिल्म लास्ट चली नहीं है, चलो थोड़ा इस बार फीस इतनी ले लेंगे. एंड वो एकदम से ऐसा था कि प्रोड्यूसर को लगता था ठीक है इतना ही दे दो तो क्या फर्क पड़ता है. और डायरेक्टर भी ऐसे ही थे और ज़्यादातर इस तरह की फिल्में बनती थी. अब जो है वो बहुत सिस्टमेटिक हो गया है मामला. एंड मुझे तो बस ये लगता है कि बहुत अच्छा भी हुआ है, इसलिए कि फाइनेंशियली जो है अब उतनी प्रॉब्लम नहीं रही जो हम लोगों को पहले, इसलिए कि पहले 2-2, 2.5 साल में फिल्में बनती थी. इसीलिए कि भाई बहुत बड़ा रीज़न होता था कि वी वर अरेंजिंग मनी, कि जो पैसे अरेंज कर रहे हैं. और इसमें कोई बहुत शर्म की बात भी नहीं थी. पहले जो कहते थे क्या हुआ डेट्स ली थी, क्या हुआ, बोले सर पैसे नहीं हुए, अच्छा ठीक है चलो, तो बहुत नॉर्मल बात थी. तो अभी पैसों की कोई कमी नहीं रही है और बहुत सारी अच्छाई हुई है. और उसके बाद ये है कि फिल्म का आउटकम जो भी हो, आपको जो एक प्रॉमिस हुआ है, जो एक पेपर में लिखा है, वो आपको मिल जाता है. पहले ये होता था कि भाई लोग माफ भी कर देते थे. जो अच्छे जो प्रोड्यूसर होते थे वो कहते थे यार आपको भी पता है थोड़ा, अच्छा ठीक है. जो ज़्यादा अच्छे होते थे वो चेक दिया करते थे और वो हमेशा हमारे ड्रॉर में ही रहते थे. तो ऐसे कई चेक्स हैं जो आज तक कैश ही नहीं हुए. और ऐसा था, लेकिन आज जो है कम से कम ये है कि जो आउटकम कुछ भी हो फिल्म का, जो प्रोमिसेस है वो पूरे होते हैं और बहुत सिस्टमेटिक काम होता है. और एक ही काम जो है वो सिर्फ एक आदमी पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे लोग जुड़कर जब काम करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है. लेकिन ये भी है कि जो बिजनेस भी है उसमें भी जो है कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा हिस्सा मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़हीन लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं IIT से, IIM से MBA करके, और वो बहुत ब्रिलियंट दिमाग है.
सिर्फ उनको इतना मुझे पर्सनली लगता है रिलाइज थोड़ा होना चाहिए कि वो है क्या, वो क्रिएटिविटी भी उतनी जानते हैं, अगर नहीं उतनी जानते तो वो क्रिएटिव लोग भी साथ में रखें, ताकि क्रिएटिव माइंड और बिजनेस माइंड अगर दोनों साथ में मिलकर अगर ये काम चला, मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे की ताकत है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो एक ताकत है। अगर ये दोनों मिलकर फिल्में बनाएं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्में हो सकती हैं। आपने बहुत सही कहा कि फाइनेंस साइड से आते हैं लेकिन क्रिएटिविटी एंड बाकी बातें नहीं समझते हैं। मैं एक वाकया सुनाऊंगा आप लोगों को। ABCL कंपनी हुआ करती थी, अब तो वो है नहीं, इसलिए मैं नाम भी ले सकता हूँ। ऑफकोर्स वो मतलब बहुत अर्ली डेज में था, तो वहाँ ABCL के CEO थे, तो उनकी एक फिल्म लगी थी जिसको मैंने रिव्यू खास नहीं दिया था। तो एक बार उसके ऑफिस में मुलाकात हुई, वो क्या 5th डे, एंड वो इतना एक्साइट हो गया कलेक्शन देख के, ही ट्राई टू कन्विंस मी कि आपने गलत रिव्यू दिया है, देखो 3rd डे देखो हमारे कलेक्शंस कितने बढ़ गए। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने बोला 3rd डे तो संडे है ना। नहीं आप वो भूल जाइए, वैसे ही बढ़े, वैसे ही बढ़ेगा। तो फिल्म इंडस्ट्री का ज्ञान, जैसे आपने कहा, क्रिएटिव साइड एंड फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही टिपिकल इंडस्ट्री है, यू नो। तो महावीर, आपने हाल ही में कॉर्पोरेटाइजेशन एट इट्स पीक, पूरी इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप बतौर को प्रोड्यूसर जुड़े एक इंस्टीट्यूशन से, राजश्री, मैं बात कर रहा हूँ ऊंचाई की, ऊंचाई में महावीर जैन इज को प्रोड्यूसर। तो इस कॉर्पोरेट कल्चर में एक फैमिली है जो अपने टर्म्स पर फिल्में बना रही है, जो किसी कॉर्पोरेट के साथ नहीं जुड़ी, इस फिल्म में भी नहीं जुड़ी। 3 प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन they made the film at their terms, they also released the film on their terms। आपको क्या लगता है, अगर एक कॉर्पोरेट हाउस होता, ऊंचाई जैसी फिल्म मिड ओल्डर जनरेशन के एक्टर्स के साथ बनी है, लेकिन तबीयत से बनी है, इतना पैसा लगाया है, इतने शानदार तरीके से बनी है, अगर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेट हाउस उस फिल्म के साथ जुड़ जाता, तो आपको लगता है इस प्रकार से फिल्म बन सकती थी? सर, मैं ये कहूँगा कि जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन का माइंडसेट है, मैं उनकी बात पहले शेयर करना चाहूँगा कि वो आई थिंक 75 ईयर से फिल्में बना रहे हैं और कमाल की एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं। तो वो एक फिल्म में करीब 5 से 7 साल बनाने में उनके जाते हैं। तो वो जब उनकी फिल्म बन के आती है, उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी कंप्लीट फ्रीडम है, वो पूरी फिल्म अपने तरीके से प्लान करते हैं, मेकिंग से लेके रिलीज से लेके हर तरीके से वो चाहते हैं कि वो पूरा कंफर्ट उनके पास रहे। और कॉर्पोरेट आने से उनको ऐसा लगता है, राष्ट्रीय को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो फ्रीडम और कंफर्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और इसलिए वो थोड़ा सा फर्क न आए, इसके लिए वो चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल लोगों के साथ काम करें। और इसी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली राष्ट्रीय में जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स अगर कॉर्पोरेट होता तो कुछ चीज़ों में शायद स्ट्रेंथ बढ़ जाती ऊंचाई के लिए, पर कोई वजह से उनको लगा कि फिल्म के लिए ज़्यादा जरूरी है कि वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़े। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय के जिस तरीके का राष्ट्रीय का वर्किंग पैटर्न है, उनके लिए ये करेक्ट डिसीजन था उनका, और ये ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि जैसे वो चाहते थे कम थिएटर्स में फिल्म रिलीज हो, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म हो, एक सर्टेन ऑडियंस की फिल्म थी, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर टारगेट ऑडियंस। तो वो जो ऑनेस्टी झलकती है उनके मेकिंग में भी, उनकी रिलीज में भी, उनके इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरे मार्केटिंग कैंपेन में भी, तो वो जो वो चाहते हैं कि उसकी फ्रीडम उनको बरकरार रहे, तो आई थिंक वो इंडिविजुअल के साथ ही रहती है, ऐसा मुझे लगता है। अभिषेक, आपने फिल्म मेकिंग में कदम रखने से पहले कॉर्पोरेट हाउस में आपने नौकरी की थी, एड लैब्स में, तो तब आप फेंस के किस साइड में थे? अब आप फेंस के उस साइड हैं। जाहिर सी बात है, जब एड लैब्स में प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दिक्कतें आती होगी, यार ये रेड टेपिज्म है, या यार ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है तो बस फोन करो कि मेरी शूटिंग परसों से है, इतना पैसा चाहिए, ये लोकेशन है, ऐसा है, परसों तो नहीं, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद। लेकिन यहाँ तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक्सेल शीट्स बाकायदा बनती है, प्रोजेक्शंस करने पड़ते हैं। तो तब आप उस साइड थे, अब आप इस साइड हैं।
आपको उस दौर में कैसे लगता था, और अब जब आप फिल्म मेकर हैं जो कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए फिल्में बनाता है, तो कैसा लगता है? कुछ बदलाव है, कुछ अलग है? डेफिनेटली इट्स एन एवोल्यूशन. अगर हम देखें तो फिल्म उद्योग में कॉर्पोरेटाइजेशन मेरे ख्याल से सन 2000 में हुआ शुरू, जब ये पैसा आने लगा, जो कि एक तरह से एक लिहाज से अच्छा था, बिकॉज क्लीन मनी, इंस्टीट्यूशन मनी केम इन. मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, पहले मैं NSD में, मतलब मैं थिएटर कर रहा था, वहाँ से जब ग्रेजुएट हुआ तो मैंने एक किताब पढ़ी विच इज़ एन अमेरिकन बुक ऑन एंटरटेनमेंट सेक्टर, और उसमें दो दायरों में डिवाइड किया था इंडस्ट्री को, क्रिएटिव्स एंड सूट्स. यू नो दैट्स देयर टर्मिनोलॉजी, इट्स एन एक्चुअल टर्मिनोलॉजी इन बॉलीवुड. तो मैंने पढ़ा क्रिएटिव्स मतलब हम जैसे लोग, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एंड सूट्स आर द कॉर्पोरेट्स, द स्टूडियो पीपल. So I was really fascinated, क्योंकि उस किताब में एक चीज़ ये लिखी थी कि creatives and suits, if they come together and create, that is the best film that you can. जैसा अभी अनीस भाई ने बोला. So मेरा, जब मैं NSD खत्म करके मैं मुंबई आया तो मेरा सपना फिल्म बनाना ही था, लेकिन मैं किसी को असिस्ट करने के बजाय मैंने सोचा कि मुझे सूट बनना है कुछ सालों के लिए. मुझे समझना है कि दूसरी साइड से what is it that people want. बिकॉज यू नो आई थिंक एक रिलेशनशिप तभी चल सकता है जब आप दोनों चीज़ों को समझें. वैसे तो ये इंडस्ट्री सरस्वती वहाँ की इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आपको लक्ष्मी जी भी चाहिए तो भी सरस्वती पूजन पहले आवश्यक है, तो फिर लक्ष्मी जी अपने आप वापस आपके बीच आती हैं. उस चीज़ को समझने के लिए वो 4 साल बहुत बेहतरीन थे. और मैं जब आया संयोगवश 2004 में, मैंने मिस्टर मनमोहन शेट्टी की कंपनी एयरलाइंस को ज्वाइन किया. तब भी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन उसके तुरंत 1-2 साल बाद रिलायंस, अनिल अंबानी जी वाला रिलायंस, उसने टेक ओवर किया और काफ़ी पैसा फिर आना शुरू हुआ और काफ़ी चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई कंपनी में भी, जो कि ऑफकोर्स जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जब और ज़्यादा पैसा आता है तो काफ़ी सारे हाथ खुलते हैं, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. सडनली देयर वाज ग्रोथ, बट आई थिंक जैसे मैंने बोला ये एक एवोल्यूशन है. पहली दफ़ा मैंने 2006 के एंड में या 2007 के अर्ली, आई कांट टेल यू द नेम, लेकिन मैंने पहली बार हम लोग एक बहुत बड़े प्लॉट पॉइंट में बोलूँगा जिसको मैंने विटनेस किया था. पहली दफ़ा हमने किसी स्टार को डबल डिजिट सैलरी एक फिल्म के लिए ऑफर करी थी. एंड आज आप देख सकते हो डबल डिजिट करोड़, ऑफ कोर्स. And that was the first time this happened, and I was there at that moment, not knowing that one day I'll be making films on this side of the fence soon. But that's how it started. I'm not saying it's wrong or right. I'm just saying that's an evolution. और आज हम यहाँ हैं जब हम बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या स्टार्स को अपनी फीस कम करनी चाहिए. So I think कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सीख मिली है over the years, और ये एक adjustment time, एक correction time है. आज जब मैं फिल्में बनाता हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड देख चुका हूँ, so I'm a producer-friendly director. When I make a film, even if I'm making a Ram Setu or a Parmanu or a Suraj Mangal Bhai, I know because I've been a suit that what is it that they are also wanting and they are looking for to safeguard their interests. And I try and budget it and make the film in that way. I think कहीं ना कहीं उस वजह से मुझे ये फायदा हुआ. And I overall think corporatization is definitely the best thing that happened to the film industry. Because जैसा अनीस भाई ने बोला, एटलीस्ट चेक्स तो कैश हो रहे हैं. So I think that's not a bad thing, because एक क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत जरूरी है अपना घर चला पाना. And I'm so happy that he has seen the transition, and he has seen both worlds and he's ruled both worlds. So I'm really happy, sir. We are learning from you. Komal, I'll give you a live example of this Excel sheet meeting, the beast, the Excel sheet. So when I don't know if you know, but we did not get anybody to make Queen. Okay, we were going from house to house to house, telling the script, but it was me. My second film, we weren't able to raise 9 CR to make that film. And finally one day we decided, which day we decided to go and shoot the film, we'll start. We were on the 7th day of shoot in Paris, and we got a call saying, we haven't managed the money, so pack up and come. Okay. And by that day we had reached a point where we were paying for the taxi fare from our credit cards and everything. The problem was we couldn't leave on the 7th day because we didn't have money to clear the hotel bill. And in Paris, they won't let you leave till you clear the hotel bill.
but we ordered food already for the next 2 days. So we said, okay, let's just continue to be here for another 2 days and see what happens. Then on the 9th day, we got a call saying that you move on to Amsterdam and we're figuring it out. We went to Amsterdam just waiting to be told whether the film is wrapped up or we'll continue the shoot. On the 14th day, we got a call saying Vikas Behl Abhishek Sharma, who was in Viacom at that time, he has decided to back the film, putting his neck on the line, okay, in his company. Because the Excel sheet was not agreeing with the film at all. But he said, I will put my neck on the line. We got the money and then we continued to shoot. Otherwise, that film was called off. Okay. Wow. Now that's the beauty of that single producer sitting inside the corporate, who says that I'll put my neck on the line and I will get this film made, and this risk I will take. So that if that comes together, I think it's a great combination. But that has to happen. And yeah, so that's just an example of what they were saying. Very beautiful example. For those who are not understanding, we are constantly referring to Excel sheet. Individual producers जब हुआ करते थे, what used to happen is the filmmaker used to go and narrate his script, and if he got charged, if he thought as passionately about the film as the director or the writer thought, he would say हाँ बनाते हैं. उसके बाद डिस्कशन होता था, इतने बजट में बना देते हैं, थोड़ा बजट कम कर दो, इसको साइन कर लेते हैं. कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, when you go to a corporate house with a project कि मुझे ये फिल्म बनानी है, you ought to know your economics at the back of your hand. एक्सेल शीट वो कॉर्पोरेट हाउस बनाता है कि रिकवरी इस फिल्म की इतनी हो सकती है और कॉस्ट इतना होगा. अगर पेपर पर वो टैली नहीं हो रहा है, कॉस्ट इज फार मोर देन द रिकवरी, एस्टिमेटेड रिकवरी, वो प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ता है. इसलिए मैंने कहा एंड विकास ने कहा, इन सब ने कहा कि एक्सेल शीट का कल्चर, तो ये एक्सेल शीट समवेयर इज टेकिंग अवे द पैशन आउट ऑफ फिल्म मेकिंग. ऐसा कुछ लोगों का सोचना है. अनीस भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हम पैसों की बात, कॉर्पोरेट कल्चर में पैसों की बात को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं पैशन थोड़ा कम होता जा रहा है? मुझे आई फील कि लास्ट में जो फिल्म हम बना रहे हैं ये है बिजनेस. हर आदमी इस फिल्म से इसलिए जुड़ा हुआ है कि उसे 2 रुपए मिले हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है ये समझना कि ये फिल्म जो है ये कितने में बनेगी, इसका क्या प्रॉफिट होगा. सारे पैशन और सारी क्रिएटिविटी अपनी जगह है, बट ये हिसाब किताब भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम क्रिएटिव आदमी को अगर कोई 1000 करोड़ दे दे, कहे सर इसको लगाइए, तो हम एक फिल्म बनाएंगे कि भाई मुझे लगता है वो भी शायद थोड़ा कम पड़े. हाँ, वो शायद कम पड़ जाए बाद में. शायद फिर अगर प्रोड्यूस हम कर रहे हैं तो कहीं तो उधार लेके फिर वो जो है फिल्म बनाएंगे. बजट ऑलवेज कम होता है. तो मुझे लगता है कि ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि ये जो बिजनेस है ये भी बहुत ज़रूरी है. और ये जो है, जो बिजनेस माइंड्स हैं, ये बता सकते हैं कि भाई क्या होना चाहिए. बिजनेस तो पहले भी होता था, बट पहले ये बात सुनने को नहीं मिलती थी कि पैशन से फिल्में नहीं बन रही है. आज कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद हर 3-6 महीने में ऐसी एक आवाज उठती है, यार अभी तो वो मशीन की तरह फिल्म बना रहे हैं, पैशन थोड़ी रहा. ये क्यों हो रहा है और ये ऐसी बात क्यों उठती है? एनीबडी कैन टेक दिस क्वेश्चन. नहीं, I don't agree with this. I'll tell you, Mr. Manmohan Shetty again. That was a corporate company at that. Even when Reliance money came in, Mr. Shetty was, managing it. We made some beautiful films with Mr. Prakash Jha, with Mr. Government of Goa, with Vipul ji, many directors, at that time, and they were passionate films, and in fact, films which won national awards, films which were really appreciated by public. One of them was Rajniti also, if you remember, which we collaborated with UTV, I think, at that time. So ऐसा नहीं है, like he rightly said, passionate लोग हैं. अभी विक्रम की बात हो रही थी. विक्रम मल्होत्रा is my producer, one of the producers, along with Mahavir Jain on Ram Setu. I have worked with the man. He's from a corporate background, very passionate guy. Similarly, UTV at its time when Ronnie was running it, very passionate company. So I think it is just like how some independent producers don't pay you. Similarly, some corporates overindulge themselves. So that's their negative, right? Everything has a negative. But इसका मतलब ये नहीं है कि corporatization एक राक्षस है. I think that's required because आप मुझसे पहले से इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं. पहले कहाँ से पैसा आता था और कैसा पैसा आता था हम सब जानते हैं.
तो वो एक टीम में बहुत ज़रूरी था, which is much more important than other things. And passion, I think आ सकता है अगर इस तरह के लोग, मिस्टर शेट्टी, विक्रम, इस तरह के लोग अगर जुड़े रहे फिल्म उद्योग से, जो कि हैं और काफ़ी तादाद में हैं, हम सब ने ऐसे लोगों के साथ काम किया है। आई थिंक मैं आखिर में यही बोलूँगा कि हम सबको बस टटोलने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये जो पैसा है उसके लालच में हम गलत फिल्में तो नहीं बना रहे। आई थिंक ज़्यादा बड़ा मुद्दा इंट्रोस्पेक्शन क्रिएटिव लोगों का है, सूट से ज़्यादा। सूट्स आर देयर टू पे यू, बट आर यू रेडी टू डिलीवर? And today this question is even much more pertinent than it was, say, 2 years back. Before the coronavirus. Yeah. Yes. अनीस भाई, क्योंकि आपने उस दौर में भी फिल्में बनाई हैं, ये जो अक्सर कहा जाता है कि it was unclean money, it was tainted money, क्या फ्रैक्शन या क्या परसेंटेज, किस रेशियो में उस प्रकार का पैसा इंडस्ट्री में लगता था और किस रेशियो का पैसा वाकई में साफ हुआ करता था? The financiers used to put in clean money in films. मुझे लगता है कोमल जी कि अगर मैं 10 फिल्मों की बात करूं तो शायद 9 पिक्चरें बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही नीट एंड क्लीन पैसों से बनती थी। 1-2 लोग हर जगह एक्सेप्शनल होते हैं, तो वो कहीं ऐसा होता होगा और चलता भी था, हमने सुना भी है और होता भी है, मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने काफ़ी प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर बार जो है वो गिरवी रख के फिल्में बनाई हैं। जैसे मैं जिनके साथ काम करता था, हमारे साहब राज कपूर साहब, जब उन्होंने फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, तो वो सारी दुनिया को पता है कि क्या क्या नहीं गिरवी था, और जब वो फिल्म फ्लॉप हुई तो उसके बाद वो कितनी परेशानियों से गुजरे जब तक कि नेक्स्ट फिल्म नहीं बनाई। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ रॉन्ग मनी आता था, आई थिंक इट्स नॉट राइट। वो हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, और मुझे लगता है कि मैं पर्सनली कई ऐसे प्रोड्यूसर्स भी जानता हूँ जिन्होंने अपने खून पसीना बिल्कुल जमा करके पिक्चरें बनाई। Komal, I'll also add what he was saying earlier. If you remember the time when UTV was at its peak and it was fully corporatized. I mean, there was Ronnie was running, Siddharth was there. In 2 years itself, we had made movies like Amir, Devdi, Wednesday, Barfi, Kai Poche, Pans. I was trying to, like it was one after the other. It's actually the environment that Ronnie had created, Yeah. So if the person who's helming it is creating that environment, because I think even Rajshri is a corporate. It is, in a way, it is a corporate house. Because the only difference we're seeing right now is, are you hiring people from other places inside your company or not? But even a family-run business can be absolutely corporate. I mean, I'm sure their discipline, their passion, the way they run everything is like a corporate, right? It's just that they're not gone to like we used to go for recruitment to campuses and get people, so we were just being corporate. But actually it was Ronnie's company. We were hired over there. But the passion he put in and the faith he put in behind everybody is the reason why it was just a plethora of amazing stuff coming out. And I don't think from one production house, so much amazing work coming together year after year was unheard of before that. And I think they set an example. I mean, he set an example as to how you can make the two meet. No? I remember मैं इनकी ऑफिस ड्यूटी की फिल्म कर रहा था, तो मैं जब गया तो मैं ये और सब बैठे हुए थे, रोनी जैन, लंच टाइम हो गया तो रोनी जी मुझे कि लंच करोगे, मेरे वहाँ से कर लेते हैं, आइए। मैं कहाँ ले जा रहे, क्योंकि मुझे लगा ऑफिस में आएगा। तो बाहर जब निकले तो काफ़ी लोग कतार में थे, तो रोनी जी ने एक प्लेट ली, मेरे हाथ में थी अपनी, और वो कतार में खड़े हुए थे। मैं देख रहा था इनको, इसलिए कि वो मेरे लिए बड़ा नया भी था और कमाल का अच्छा भी था, इसलिए कि ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हाँ बेटी दिखाना आएगा और हम बैठेंगे ये वो। बट वो जिस तरह टीम को बना के ये सब काम जो कर रहे हैं उसमें ये है कि एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। ठीक है जो पोजीशन है, लेकिन वो जो मुझे लगता है कि माहौल मैंने देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं, ये प्रोडक्शन की बात हुई, कुछ देर के लिए प्रोडक्शन को साइड में रख के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। वो जमाने में डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को अपना बच्चा समझते थे, बड़े प्यार से रिलीज करते थे। कॉर्पोरेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक टेम्पलेट फॉर्मेट में रिलीज करते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कॉर्पोरेट हाउस ऐसा होता है, बट क्योंकि द नॉलेज, द एजुकेशन अबाउट दिस टिपिकल बिजनेस इज नॉट वेरी वाइड स्प्रेड। बहुत लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, जैसे आपने कहा कि हम तो
मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स थे, हमारा इस इंडस्ट्री से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, आ तो गए लेकिन समझे बिना इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने लगे, और इसलिए उस प्यार से कभी कभी छोटी फिल्मों को बहुत प्यार से रिलीज करना पड़ता है, वो कॉर्पोरेट हाउस में मिसिंग होता है। तो इसका करेक्टिव स्टेप क्या है, करेक्शन क्या ले सकते हैं? I think the idea is that the producer basically, and here I'm differentiating between producer and the corporate, because आजकल आपको पता है कि बहुत सारे, जैसे विक्रम was producing, Mahavir Ji was also involved in it, Amazon was involved in it, Amazon is a corporate company, we know that. So you have to work together and you have to release a film according to its strengths. One of the prime examples that come on mind is how Kashmir Files was released with I think around 500-600 prints by Z. Beautifully done, and then how they kept increasing the prints platform release. And Z is a completely corporate company, so but they have that understanding of a film and how you position a film, which I think Rakshi also did. Rakshi had done this with Hum Aapke Kaun. Even Uchai to abhi, but as far back as Hum Aapke Kaun, शायद 32 सिनेमाज लिए थे और 32 सिनेमाज को बढ़ा के it went up to more than 500. उन्होंने फिल्म को ग्रो किया, उनको पता था कि फिल्म में दम है, तो बहुत लिमिटेड जगह लगाई कि लोगों को ये लगना चाहिए कि इसकी टिकट अवेलेबल नहीं है, तो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होगा, और वही हुआ। Correct. So there is understanding. I think it's just that उन लोगों को लेकिन थोड़ा सा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के कॉन्वर्सेशंस में रहना चाहिए कि आप किस तरह की फिल्म बना रहे हो, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि ऑडियंस क्या हो सकती है। So I think these people are doing great job. There might be a few corporates who don't understand it yet, but I think they will come around it. But the idea is that it should be a collaborative effort, even on the distribution side. विकास, क्योंकि आपने मैनेजमेंट की स्टडी की है, क्या चीजें हैं जो कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद भी इस इंडस्ट्री में लैकिंग है? क्या हमें इस चीज की जरूरत है? कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है इंडस्ट्री, लेकिन और ज्यादा मजबूत हो जाए, कॉर्पोरेट कल्चर 100% आ जाए। अभी नहीं कहा जा सकता है कि इट इज 100% corporatized. No, there are personal elements also. So what do you think is lacking in the corporate culture in the film industry? Actually, it's actually a little scary when we say how much more to corporatize. So, because I think if we can build a software which we can put inside an Excel sheet, a software called Guts. Okay. I think we'll be in a very good thing. So that's the one thing that the Excel sheet doesn't have, right? So I actually don't understand what is more corporatizing mean, right? Because is it supposed to increase creativity or decrease creativity? Because that's the only thing that matters by the end of it. And तो I say creativity तो जितनी बढ़े उतनी अच्छी है, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स की कमी लगती है, या आपको लगता है जो होना था हो गया और ये बेस्ट सिनेरियो वाला दौर चल रहा है? See, I'll tell you the differences in most industries where corporates are working. They're an industry, and then there's an industry that runs and grows. And I think it's not about corporate right now; it's about the industry now. And I think that industry needs to get much more professional, right? So that every corporate, every single studio, every this thing, the faith they have, the discipline they have, and the fact that we're all traveling together, right? And that traveling together can happen by corporatizing the industry and not just individual corporates. Yeah. Am I making sense? Yes, you are making a lot of sense. But which gets me to my next question. महावीर जी, अनीस भाई, जैसे इन्होंने कहा, इंडस्ट्री एज अ होल को ग्रो करने की जरूरत है, यही लैकिंग है इस इंडस्ट्री में। वैसे कहने के लिए एकता बहुत है, लेकिन हर इंसान अपने फिल्म के लिए बहुत सोचता है, पूरी इंडस्ट्री के लिए सोचने वाले बहुत कम है। ऑफ कोर्स महावीर जी, आपने एक आउटफिट शुरू किया है, अच्छा इनिशिएटिव किया है। He's launched an initiative whereby new talent will be honed, will be identified, will be developed, and he has got the support of almost every big filmmaker. But इसके अलावा कोई इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव और स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री है। कोविल जी, मुझे लगता है कि इंडिविजुअली हम लोग जो सारे फिल्म मेकर्स हैं, वो अपनी अपनी फिल्मों के लिए और अपनी इंडस्ट्री में जो थोड़ा हो सकता है
बाहर जाने की जरूरत है कि जैसे आज कहने के लिए अभी आज अगर हम पूरे इंडिया के थिएटर्स गिने तो कितने होंगे? आज समझिए चाइना में अगर मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार है तो यहाँ होंगे 6-7 हज़ार। तो अगर ये थिएटर्स ज़्यादा हों तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल पिक्चर भी बहुत बड़ा कलेक्शन कर सकती है। इसके अलावा जो पायरेसी है मुझे लगता है कि उसमें हम सब लोग जो अपना खून पसीना जो इकट्ठा करके जो फिल्में बनाते हैं इतने पैशन से और उसका कुछ भी पैसे या जो रेवेन्यू हम लोगों को मिल ही नहीं। Actually, all these small things only that need to make it the. मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये शायद 2 इशू है कि जैसे आज मेरी फिल्म जब रिलीज हुई आई एम श्योर कि सारे फर्स्ट डे जब मुझे पता लगा आई वाज वेरी टेंस जिस दिन भूल रिलीज हुई तो पता लगा कि वो चल रही है तो मैंने कितने फोन लगाए होंगे मेरे प्रोड्यूसर्स को उसको दे वर ट्राइंग बट तो वो ऐसा लगता है कि वो जो रेवेन्यू है वो किसके पास जा रहा है वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं और कोई एसोसिएशन नहीं था जो भूल भुलैया 2 के लिए खड़ा हो सके। कोई एसोसिएशन नहीं है कुछ नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें शायद गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर सकती है इसलिए कि लोगों को ये लगता है कि ये करके जो है बहुत आसानी से अगर पकड़े भी गए तो निकल सकते हैं। तो पहले तो वो मुश्किल हो जाता है लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करना कि भाई पकड़े और जब पकड़े भी हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सख्त कानून बनने चाहिए जहाँ पर पायरेसी करने वक्त इंसान को 2 मरतबा सोचना पड़े कि यार ये जो लोग है ये एक बड़ी इंडस्ट्री है और ये कितनी मेहनत करके जो फिल्म बना रहे हैं उसका रेवेन्यू उन तक पहुँच ही नहीं रहा है। Now, Komal, if you see, every time you meet friends, directors, producers, actors, everyone is screaming कि 350 रुपए का समोसा क्यों है, right? Now, corporatization is not just about us here. We have to see everything in the holistic. The entire industry की running. Yes. Like I was saying, कितने theatre हैं? When will we reach 20,000? When will we reach the villages? हर फिल्म जो है वो मिनिमम अगर बिजनेस करेगी तो 200 करोड़ कर सकती है अगर ये 2-4 चीजों पे ध्यान दिया जाए तो।